इज्तिमा हैं वो मुसलसल ताखीर का शिकार है। सुप्रीम हाई कोर्ट में किसी हद तक बेहतरी हुई है कि वहाँ पर जो केसेस हैं जल्दी से अपना उनकी हियरिंग हो रही है और तय की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा मुकदमा जो है हज़ारों की तादाद में उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात है। लोअर कोर्ट्स में तो कोई हाल ही नहीं, लाखों केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। जज आते हैं, घंटा एक बैठते हैं, उसके चले जाते हैं। उनको भी पता होता है जब तक मुझसे ऑर्डर नहीं आएगा मैं इसे फैसला नहीं कर सकता, तो मैं क्या क्या करूँ। तो ये सारी ये जो ताखीर है ये दरअसल इंसाफ से इनकार है। आप डिनाई कर रहे हैं कि हमने आपको इंसाफ नहीं देना, किसी सूरत आपको काम करने नहीं देना, जजेस को भी या लोगों को भी। अच्छा, इस दौरान हम देखते हैं कि ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद के तकरीबन मेरे ख्याल में 3,815 रेप केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये बहुत बड़ी तादाद, 3,815 मामूली केस नहीं है। उसी तरह ख्वातीन के खिलाफ साइबर क्राइम्स के तहत 2,586 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए, जिसके तहत काम उसको भुगत रही है अपने अदालतों में अपने मामला। उसी तरह इसमें जो है हमारे ऑनर किलिंग में 470 ख्वातीन जो है ये मारी गई। ये हमारा नहीं, ये नेशनल पुलिस ब्यूरो की रिपोर्ट है। हम समझते हैं कि इससे बहुत ज्यादा केसेस ज्यादा है, क्योंकि केसेस रिपोर्ट नहीं होते। जैसा मिसिंग पर्सन के रिपोर्ट नहीं होते, ये भी नहीं होते। लोग घरों में फैसला करते हैं, अदालतों के चक्रों से बचना चाहते हैं, कहाँ धक्के खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, वो फिर वहीं पर नीचे दफन हो जाते हैं और कोई इस पे बात नहीं करता। अब ये दूसरी तरह ट्रांसजेंडर्स हैं, उनका 19 ट्रांसजेंडर को कत्ल किया गया। अभी 19 फिगर लगती है, 19 मामूली बात नहीं, तो उनकी आबादी के रेशो से अगर देखें तो बहुत ज्यादा फिगर है। 19 मामूली बात है कि 19 ट्रांसजेंडर को कत्ल किया गया, 2 पर तेजाब फेंक के उनको जलाया गया और 13 को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये सूरत ट्रांसजेंडर के साथ है हमारी। उसी तरह मजहबी अक़लियतों का मसला है, जिसमें अहमदिया कम्युनिटी की 21 आबादगाहों पर हमले हुए, उनके कब्रिस्तानों को, कब्रों को मिसमार किया गया, उनके जो और इसी तरह के जितने भी अहम जगह थी उन पर हमले किए गए, उनको तबाह बर्बाद किया गया। दूसरा जबरी मजहबी तब्दीली के जो गवर्नमेंट ऑफ 10 केस रिपोर्ट हुई, वो यार 50 केस तो हम आपको दिखा सकते हैं। रोजाना वहां पर जितने लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी बच्चियों को किस तरीके से उठा के गायब किया जा रहा है, किस तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है तशद्दुद का, उनका पता ही नहीं चलता। अब कहते हैं उसने जी मजहब कबूल कर लिया, 14-18 साल से कम तो हम कहते हैं वोट नहीं कास्ट कर सकता। अब 13 साल की बच्ची को कहते हैं उसने मजहब इतना अहम फैसला वो कर लिया, ये कैसे हो सकता है? आप कैसे अलाउ करते हैं 13 साल 14 साल या 15 साल की बच्ची को मजहब तब्दील कर रही है, ये शादी कर रही है, जबकि 18 साल हमारे जो कानून है वो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि 18 साल से कम उम्र बच्चा शादी करे। लेकिन फिर भी आप उनको भी तिफत देते हैं। यहाँ ऐसा सामने आया हमारे केस, जिसे कोर्ट ने नाम नहीं लूंगा, इसी तरह का दिया जिसमें 13 साल की बच्ची को कह दिया जी शादी हम खत्म नहीं कर सकते। वो शादी खत्म नहीं कर सकते तो किस लिए आप लोग बैठे हैं? जो 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, क्या करेगी, किसके सामने रोएगी, कीजिएगी? ये सारी सूरत हमारे मुल्क में अक़लियतों के साथ होती है, उनको अगवा किया जाता है। वहाँ जो ट्रेडर हैं, खासतौर पर सिंध में हिंदू कम्युनिटी जो है ट्रेडिंग में काफ़ी आगे है, बिजनेस में ये, उनको अगवा कर लिया जाता है, फिर पैसे लेके उनको छोड़ा जाता है, करोड़ों रुपए उनसे लिए जाते हैं। उनकी बच्चियाँ हमें ठीक है मुसलमान होगी बच्ची 18 साल की भी अगर होगी है तो माँ बाप से मिलने तो आप मना नहीं कर सकते ना। इस्लाम के कौन से उसमें लिखा हुआ है कि बच्ची जो अगर मुसलमान या मजहब तब्दील कर ले तो अपने वालिदैन से नहीं मिल सकती, वालिदैन से नहीं मिलने देते, सिविल सोसाइटी को एक्सेस नहीं देते, इवन पुलिस को एक्सेस नहीं देते कि अब
मुसलमान हो गई, आप इससे नहीं मिल सकते, आप जाएं यहाँ से। ये सब कैसे फैसला होगा? अब उन बच्चियों का पता नहीं चलता, आपने उनको एज ए सेक्स वर्कर कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, उन बच्चियों को आप ये जो खुद को बीमार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसका कोई पता नहीं होता। ये बहुत बड़ा अलमी है हमारे साथ। यहाँ पर हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से उनके साथ जो रवैया रखा जा रहा है, जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है। उनके साथ जुल्म जो ज्यादती जो है, पिछले दिनों भी आपने देखा होगा सरगोदे में बगैर कोई केस नहीं होता। ब्लास्फेमी एक ऐसा ड्रामा है, इससे बड़ा ड्रामा आज तक हमने सुना नहीं देखा नहीं। वो जहाँ कुछ जायदाद का मसला होता है, आपने देखा है जमीन क्रिश्चियन के पास है, हिंदू के पास है, महंगी हो गई है, पहले सस्ती थी, उसे कहेंगे जमीन हमें दे, वो नहीं देता। जब कहते हैं नहीं मैं बेचना नहीं चाहता, तो ये होता है कि उसमें ब्लास्फेमी का, जी इसने कुरान जला दिया था, इसने फलां कर दिया था, इस तरीके से करके वो अब तो थोड़ा सा टीएलपी पे पाबंदी थोड़ा सा हुआ है, वरना हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं और उसको जिस तरीके से मारा जाता है, जिस बेदर्दी से, लाठियों से, डंडों से जलाए जाते हैं उनके जिस्मों को, उसकी बहुत सारी वीडियो देखी भी होंगी, सोशल मीडिया पे भी आती है, सारी चीजें आती हैं। ये सारी मसाइल जो है इनका हल हमें ढूंढना है, हमें इस पर बात करनी है, आवाज उठानी है। उसके बाद लेबर, हमारी रियासत में कम से कम उजरत जो है वो 40,000। मैं इंतहाई दावे से कह सकता हूँ कि किसी अदारे में, इवन गवर्नमेंट अदारे में भी लोगों को उसकी जो उजरत है वो नहीं दी जाती 40,000, बल्कि उनको 18,000, 15,000, 14,000 इस पे रखा जाता है। और उसका तरीकाकार इन्होंने ये निकाला है कि वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आगे किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और लोग जो है वो बेचारे जो है वो तनख्वाह के लिए धक्के खाते रहते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि हमारा तो वास्ता नहीं, कॉन्ट्रैक्टर का उनका वास्ता, हमारे मुलाजिम तो नहीं काम करें। तो ये एक ज्यादती जुल्म का एक नया तरीका ईजाद किया गया है, जिससे मजदूर जो है वो परेशान है। लेबर जो है हमारी वो अच्छा उस पर मगर इस दफा काफी ज्यादा हमारे वो बेरोजगारी जो है वो भी बढ़ी है, जिसका कोई ना कोई तदारक होना चाहिए। हम इसके भी हक में नहीं है कि आप कम से कम तनख्वाह की बात करें। ह्यूमन राइट्स कमिश्नर बात करती है कफाफी उजरत की, लिविंग वेज की बात करती है। लिविंग वेज जो है वो तय करें, उसका जैसा दुनिया में दी जाती है, दुनिया में है लिविंग वेज जो भी तय की जाती है, आप उसको दें। हम समझते हैं कम से कम 75,000 रुपया तो होनी चाहिए, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको उसके साथ साथ रेशो के साथ बढ़ाया जाना चाहिए। और मजदूरों के खिलाफ केसेस अगर कहीं होते हैं, वो अपने मुतालबात के लिए अपने किसी फैक्ट्रीज डायरेक्टली अब रेंजर्स को फोन करती है। सिंध में तो मैंने देखा रेंजर्स को फोन करती है, वो आके उनके साथ उनको पकड़ लेते हैं, उनके साथ केसेस बनाते हैं, फिर उल्टे सीधे ये करता था जी अपना फलाना काम करता था, दहशतगर्दी में मुलव्वस है, ये इस तरह दबा के उन चीजों को दबाया और जा रहा है। ये एक दिन में लावा फटेगा और हम सबको इसमें ले डूबेगा। हमें यह सूरत हादसाती नहीं, बल्कि एक वाज़ेह सिमत की निशानदही करती है। ऐसी सिमत जहां इख्तिलाफ राय को खतरा समझा जाता है, आज़ादी को कंट्रोल किया जाता है और हुकूक को समझते हैं शायद हम बरात दे रहे हैं, इसका हक नहीं है, हक नहीं, बल्कि उसको बरात के तौर पे हम इसमें एहसान कर रहे हैं कि हमें अगर कुछ दे रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को मजदूरों, किसानों, ख्वातीन सारे सिलसिले इनको देखना होगा और दोबारा से इसको ठीक करा। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान इस सूरत हाल पर न सिर्फ तशवीश का इजहार करती है, लेकिन वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करती है कि ये किसी सूरत हमें कबूल नहीं। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं जबरी गुमशुदगियों के हर केस की शफाफ और आज़ादाना तहकीक की जाए
उस ईमानदारान को अदालतों के कटहरे में लाया जाए। जब तक आप उनको पकड़ने वाले हैं, करने वाले हैं, तमाम ऐसे कानून का असर नो जायजा लिया जाए जो शहरी आज़ादियों को महदूद करते हैं, इजहार राय, मीडिया और पुरअमन इज्तिमा के हक को गैर मशरूत तौर पर बहाल किया जाए। ये मेरी गुजारिशात है। बहुत शुक्रिया। I request Muhtarama Hina Jalani to add to what the chairperson has already said. First of all, let me thank all of you for coming here. Your presence obviously gives us a great deal of strength and encouragement that there are people in this country who are even today interested in knowing what the situation of human rights is in our country. You are all people who are well informed of the situation. I don't think anyone sitting here has ever been unaware and uninterested in what the situation of human rights is in this country. So thank you very much for being here. It is your presence that gives us the resilience and the energy to do the work that we do. I also want to thank all my associates in the Human Rights Commission of Pakistan, who have, with a great deal of commitment, allowed this organization to increase and improve its capacity over the years to be able to find the truth and to tell the truth and speak truth to power. I think our chairperson has given a fairly comprehensive idea about what our work has been and what are our major concerns with regard to human rights in this country. I'm a founder of Human Rights Commission of Pakistan, a lawyer and a human rights defender, and I have been working in this field for 40 years. I must say that what I want to say to you in the next 5 or 10 minutes is more with respect to answering the question that I am frequently asked. What is the difference? Is this the worst period of human rights that you can remember? In my honest opinion, it is neither better nor worse than what we have been experiencing in the past many decades. The problem for us is priorities of governments change, and with that changes the issues and concerns that arise because of the power of the executive. Let me say this in one sentence. While the state of Pakistan, including all institutions, have increased their capacity to control, there is very little that I can see in the past many decades that has been done in order to improve the capacity of the state to protect. The number of victims has increased. The category of victims has now expanded. But there are some improvements. And before I mention those improvements, I'll give some examples. Let me make it very clear that these improvements are not because of governments, rather despite governments and the institutions. The civil society in this country since the 1980s has increased its capacity, has grown in strength and its ability to expose violations and to recommend correction of practices which lead to violations. This has now resulted in a backlash against the civil society. The power of the state and the control it imposes through its own weapons of control can never be balanced without a strong civil society in any country. In fact, I would say, to make a state a civilized state,
a civil society is an essential ingredient. You may, at some point, through some effort or the other, gain good reputation in the international community. But the impression of that country can only be corrected if you correct your practices inside your country and are able to show that you respect your own citizens and respect the rights of those citizens. If you do not give dignity to your citizens, your foreign relations, your foreign policy doesn't really mean very much. So with this, I would point out some of the concerns that I have. Today, the civil society is under a great deal of constraint. All kinds of illegal methods have been used to deny us the fundamental right to freedom of association, the fundamental right to operate with autonomy and without pressures. Sometimes policies are adopted for NGOs restricting their ability to take foreign funding, for instance, and drying up these organizations of resources means that you are undermining the ability of the civil society to improve what is wrong in this country. I would also go so far as to say that civil society organizations have been victimized over the past few decades with the deliberate policy of vilification that governments as well as state institutions, especially the security and military institutions, in order to discredit the truth that they present to the people so that the people can play a role in correcting those weaknesses of governance. We have used the streets to make our protest heard. We have had even discussions with the related institutions to explain to them how harmful this particular policy of suppressing civil society is. We have used the courts and emphasized that we have the fundamental rights. And even those rights that are not absolute can only be restricted by law in a reasonable manner. This is absolutely absent from the policies that the government has adopted towards the freedom of association today. Courts have failed in protecting us against those policies of the state. I am very worried about the situation of freedom of expression in this country. Many of my friends from the journalist community here who have been direct victims of this targeting by government institutions. This is a state which is now governing through policies and even legislation that is imposed by the parliament or lawmakers, but driven by the policy of the security apparatus in this country, and in order to promote a particular narrative. I'm very worried about that. I'm afraid the courts have not, again, been able to protect us against this unruly, unauthorized, and unashamedly imposed restriction on our ability to realize our fundamental freedoms. I would like to mention in particular now the whole question of the independence of the judiciary. Without an independent judiciary which has the authority under the Constitution to enforce fundamental rights, prevent the erosion of those rights, and make sure that the state, through the enforcement of fundamental rights,
is able to increase its capacity to protect. I must say that time and again, I'm hearing people call their own actions as being actions in promotion of the Constitution. Everyone says this is because the Constitution says so. And that is their particular interpretation of the Constitution, to give more and more space to the state and state institutions to impose repression and suppression. I'm going to say something in Urdu, and apologies to those who don't understand it, because I can't really translate that proverb properly. आज हमारा आइन उस प्रोवर्बियल रजिया की तरह है जो हुंडों में घिरी हुई है, और हम ये समझते हैं कि उस रजिया को हुंडों से छुड़ाने की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल सोसाइटी के कमजोर कंधों पर आ गई है। सिविल सोसाइटी बहुत रिप्रेस्ड है, बहुत चैलेंजेस है, लेकिन एट द सेम टाइम रिजिलियंट भी है। I would now like to mention, in particular with regard to the independence of the judiciary, the whole question of the 27th Amendment. Mr. Chairperson, with your permission, I would like to say, I'm not exonerating the judiciary totally, because they may have contributed to the total, breaking up of the superior judicial structures. But let me say very clearly that where I feel things have gone far beyond that than what they had suffered over the past many decades, they are much more now and done much more blatantly and unashamedly. Today, Pakistan's judicial structure has been targeted and systematically broken down. We are not just protesting against it. There is fear in our hearts now. This judicial structure has to be independent, ability to work, and ability to stay together as one entity. I remember the 1990s, early 1990s, it was the Human Rights Commission of Pakistan that first made the demand for a constitutional court. And this demand was made by Justice Dorab Patel. And I'll tell you why. He was not saying because constitutional court should be put in because of some kind of political exigency or something or the other. He very clearly said that to interpret the Constitution, you need constitutional experts. It is not within the expertise of every judge. So what his concept of a constitutional court was, a panel of judges who have absolute knowledge on not just what the Constitution says, but also to be able to judge what is the spirit of the Constitution and what is the way and the principles which have to be kept in consideration while interpreting the Constitution. We see an absence of that, unfortunately. And one of the examples that has been given to you is by the chairperson is a very cogent example, and that is of protection of the girl child. And I, as a lawyer and a human rights defender, I was awestruck. I was desperately hurt that this kind of a judgment is coming from a constitutional court. I'm just going to say two more things and then I'll finish. Our country is also conflict-ridden. We are not unaware of that. Human rights defenders community knows very well what our geopolitical situation and the dangers around us make security an imperative in this country. But we also have the right to be a part of determining what the security imperatives of this country are and how to deal with them. This is totally denied to us.
And that has resulted in security policies that weaken Pakistan's security and the security of the citizens of this country. Secondly, I would say because of the conflicts, it is not only important for us that our country is ruled by the rule of law or governed by the rule of law, it is also important for us that international law of conflict is scrupulously followed by our country, because conflict actions during any conflict that are taken by a country are taken in our name. We would be embarrassed if any serious violation of international law occurs in our name, because we ask for accountability of every country in the world that violates international law, including ours. So if there are any kinds of allegations against my country, I would expect that our country not only refutes those allegations, but gives clear evidence to satisfy not just the international community, but its own people, that this deflection from international law has not happened by them. So this is one thing that I want to say, and I'm sure everybody understands what I am referring to. I am worried that today everyone is making normal that which is absolutely unconstitutional. For instance, Mati, everyone here is talking about one page and the hybrid system. आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ देती है आपको हाइब्रिड सिस्टम? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है. आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में रियासत की जो डेफिनेशन है उसमें आपकी मिलिट्री नहीं आती है. मिलिट्री एग्जीक्यूटिव का एक सबॉर्डिनेट अदारा है. सो हम तो ये चीजें और इसको आइडियलिज्म ना समझे. मुझे लोग कहते हैं आप बड़ी आइडियलिस्टिक है. भाई साहब, मैं आइडियलिस्टिक नहीं हूँ. मैं ये कहती हूँ जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर हमें स्टिक करना है. हम नहीं स्टिक करेंगे तो आप तो हर चीज नॉर्मल बना देंगे. सो ये नॉर्म बन गया. ये हाइब्रिड सिस्टम है. वी आर ऑन वन पेज. यू आर नॉट अलाउड टू बी ऑन वन पेज. द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली डज नॉट से सो, इट प्रोहिबिट्स यू. So these are some of the things I think I wanted to emphasize, and I don't think एक बात सिर्फ जो chairperson has also mentioned, there is still a great deal of weakness in the enforcement of socio-economic rights. To some extent, the constitution is also to be blamed, because many of the social economic rights are not fundamental rights, but are spelled out in principles of policy. There was a time where the judiciary tried to enforce those rights through the principles of policy. Now there is less appetite in the judiciary to do so, which means that the vulnerable communities suffer. I must also talk about the lack of accountability and impunity, especially in the case of some of the religious minorities and communities like the Ahmadis, for instance, where life is taken, liberties are taken, livelihood is affected, and there is total impunity and no accountability for this serious violation, not just of civil and political rights, but also social and economic rights. I will end there, and hopefully this launch today will improve our capacity to think about human rights in this country, and to strengthen our resolve and our resilience to confront violations and to find the best means that we can in order to be able to whittle down those unnecessary powers that the state gives itself, in order that there is more balance in the dispensation of justice for one and in governance for another. Thank you. Thank you. Thank you very much. Before we open the floor for questions, we have two eminent speakers left. Muhtarama Nasreen Azhar,
who's the Vice Chairperson, Islamabad, 10 Capital Territories, and Muhtarma Muniza Jahangir, who's the co-chairperson of HRCP, to wind it up. And then we'll have a question answer session. Thank you, Haris. I just want to say, as far as women are concerned, on the one hand, we see that women have made a lot of progress. There is more awareness even in the National Assembly, such as it is. But on the other hand, we see that on the ground, women are still suffering the same pain, same violence that they suffered, whether it's rape, whether it's honor killings, whether it's domestic violence, and all kinds of other things. So that is one thing I want to say, that there's a greater awareness in the society, which is a good thing, but much needs to be done. And often one finds that the women-friendly laws that have been made are not known to the lawyers even, or to the police. So these things are still impediments, and much needs to be done so far. The other thing that is very disturbing is the child sexual abuse that goes on in the country. I don't know to what level it goes on in other countries, but it seems that it's very high here. And even about that, there is definitely greater awareness, and there has been some legislation, but still the situation is very, very worrying and very painful, in fact. Then I wanted to say, as far as the social justice is concerned, that's something that we have all forgotten about. Poor will remain poor, the rich will remain rich, and that's how it's going to be, it seems, forever. There has not been any progress on that, as our chairperson pointed out, that even the given daily wages that are authorized by the government are not given even by government departments. So what are we talking about? What are the poor supposed to do? They have very, very few rights in every way. And the last thing I want to say, that the collapse of international law globally, I think Hina also mentioned that, has unfortunately encouraged countries like ours to follow suit. And I mean, this is a very, very bad situation for the whole world, and we would ask our government at least to be aware of these things and give more. I don't remember many phases in our history where there has been such curtailment of civil liberties. You know, the right to take out a protest peacefully, it's not allowed anymore. People are put in jail for that and beaten up for that. And the normal things one used to do, those liberties, as has been pointed out, the PICA law, which is, you know, the freedom of expression, that has been disastrous, and it's used for all kinds, even in social, for those people who are posting things on social justice, it's been used against them. And many people are suffering because of this lack of freedom of expression. Thank you. Thank you. Well, a very warm welcome to all of you who've come this afternoon. We can't thank you enough for coming at a time where things are very tense, and we realize that it's not easy for all of you to make time and to give attention to this topic. I would like to acknowledge my colleagues and thank them for the hard work that they've put into this State of Human Rights report. A special mention to Maheen Paracha and to Farazia, who have worked tirelessly on this publication, and to Haris for leading the team. Well, let me begin by saying that I'm a journalist. I've been a journalist for 22 years now, a practicing journalist, and I'm also the co-chair of the Human Rights Commission of Pakistan. When we talk about the Constitution, we feel that as journalists, and also I speak for the Human Rights Commission of Pakistan as well, that there is an umbrella law, Article 19, but it is conditional. It is conditional that freedom of expression should come, and it should not be criticizing the judiciary or the armed forces when they are at the heart of politics in Pakistan. And all the other laws that are coming after that come from this particular provision of the Constitution, whether that's the PICA law or whether there are other laws that are made by the government.
And so there has been a long-standing demand by journalist unions and by the Human Rights Commission of Pakistan that all our laws should be in line with the fundamental principles and the fundamental rights of the Constitution. Fundamental rights are at the heart of our Constitution, and they supersede all other provisions of the Constitution. So we need to keep them at the heart of the Constitution. As far as PICA is concerned, what we have seen is that the provisions that the PICA has doled out, even those are not followed by law enforcement agencies. Even those are ignored by the law enforcement agencies. There were certain principles that were formulated and agreed upon by the government, which are not being followed. For example, the biggest problem with the PICA law is that the definition of fake is extremely vague and can be misused by the state to nab or to arrest anybody through any flimsy charges. And since late, we have had over 50 journalists in the last 1 year who have been arrested on PICA charges, and the most prominent of them have been released because the state itself, in a court of law, has been unable to prove that there were serious charges that basically proved that the journalist had committed that particular crime that he or she was accused of. So this is of particular concern, and this is a testimony that the PICA law is being used to victimize journalists. Moving on, I'll just look at a few provisions because my colleagues here have covered most of them, and I know that all of you here know about the situation very well, so you will have a lot of questions to ask. But of particular concern is also the Anti-Terrorism Act. The whole idea of the state, where it has become obsessed with its own security and less so by the citizens of this country, their security. They have generously slapped the ATA law, not just across professions, but very generously in the smaller provinces, in Balochistan specifically. Let me take you to Balochistan, where last year amendments were made to the Anti-Terrorism Act, and you could hold anybody without a charge in detention for 3 months without producing them before a magistrate. Now, this is against the fundamental rights of citizens, which are ensured in the right to fair trial. It is also in violation of the civil and political rights guaranteed by the United Nations. And therefore, we feel this denies, especially the smallest and the most vulnerable province, the right to a fair trial. And this is of particular concern because not only are they held in detention, we do not know whether there's custodial torture or not while they are being held. Similarly, in Khyber Pakhtunkhwa, although the new chief minister in his maiden speech said that he will abolish action in aid of civil power ordinance, which is now an act, which gives legal cover to internment centers, that remains active. And despite the fact that the Peshawar High Court annulled it and struck it down, the present government of Khyber Pakhtunkhwa has not gone in the Supreme Court and taken back their petition, which means that they are complicit in denying their own people a right to fair trial, especially when they are called the Insaf Party. So this is of particular concern to us, that the people of an entire province are denied the right to a fair trial. In Punjab, what we have seen is that there have been the introduction of the CCD, which has given, it's been given sweeping powers to register FIR since April of last year. And between the 15th of April and the 15th of December, at least 670 CCD-led encounters have resulted in the deaths of 924 suspects. So the data shows that in these cases, only 2 police personnel were killed and 36 were injured. And this is of particular concern because every day there are petitions against this CCD operations. The CCD, well, everybody knows. The Crime Control Department of Central government in Punjab. Yes, yes.
Yes, in April of last year, which came into effect in April of last year. It's a controlled crime department. So, and when we did try to carry out an investigation, people were so petrified that they were unwilling to speak, which is very. In Pakistan, we have many examples where people lose their life, but they continue to speak. But in this case, people have been very reluctant to give any kind of evidence. And this, I would like to also point out that this is also against the fundamental rights of our own constitution under the Torture and Custodial Death Prevention and Punishment Act 2022. And under this act, every custodial death must be investigated by the FIA under the supervision of the NCHR. That has not been carried out so far. Last but not least, I would like to draw your attention, something that is not talked about at all, and HRCP has been at the forefront of helping Afghan refugees here in Pakistan. There has been a state policy that Afghan refugees, whether they hold a POC card or whether they hold an Afghan citizenship card or whether they hold a medical visa, that they would be rounded up and they would be sent to these centers. And then they would be deported back to Pakistan. Afghanistan. Now, there was a hue and cry by all organizations that there is a large number of women and children who are at risk of their life if they are sent back to Afghanistan. Some of these women are journalists like me who have headed organizations that have talked against or campaigned against the Taliban, and they would be victimized as they have been in the past by the Taliban regime whenever they have occupied territories. The foreign minister and the foreign ministry themselves have created a list of people who are vulnerable, but they have failed to implement it. We have been continuously giving them names of people who are at risk, but there has been no movement on that. And now we have seen that Afghans who carried exit permits, which allows them to exit this country onto another country, have been denied to leave this country and to go to another country, although they have all the required documents. They have the valid visas, they have the exit permits, and they have been put back into these centers in Haji, like the Haji Center, and been threatened to be deported back to Afghanistan. This is of particular concern to us because there is a judgment right now by the Islamabad High Court which recognizes the right to liberty, the right to life of Afghan citizens. So we at the HRCP also realize that there has been a big struggle by the Afghan women. We salute them, the Afghan women, for their struggle for equality and for basic fundamental rights. And we recognize that they are at threat over there, and and the government of Pakistan should formulate policies which are friendly and humanitarian towards the Afghan refugees. Thank you. Thank you. Can I just get the microphone back so that we can circulate this one out? Thank you very much for being patient and listening to all of us. We will take questions. लेकिन मैं अपनी थोड़ी सी शताब्दी इस्तेमाल करूँगा. So you just raise your hand, don't get panicked. All will get a chance to ask questions. HRCP members later, media first, and other partners first, and then we can come to the HRCP members. Choice of Madras, आपके पास बाद में आता हूँ. So if there is a, sir, I'll come to Sawar. I'm Rashidi from Airway If News. you can speak into the microphone, sir. I'm Rashidi from Airway News. In the meeting, it was told that figures in this report are not accurate, rather minimized. And reason cited was that you don't have proof for all the figures you have. So my question is, the figures which you have produced in this report, do you also have proof of that, of those figures? You know, when I say that the Figures are conservative, it does not mean they are not accurate. There is a difference. फर्क उसमें ये है कि जिस चीज की हमारे पास शवाहिद ना हो या सबूत ना हो तो वो हम नहीं फराहम कर सकते. लेकिन हम ये कह देते हैं कि बड़ा वजाहत के साथ चेयरपर्सन ने भी अपनी बात की और बाकी जो हमारे साथी हैं उन्होंने भी आपको बताया कि ये मिनिमम नंबर्स, तो मिनिमम नंबर्स जिनका एविडेंस मौजूद है.
उसमें हमारा अपना एक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम 114 कैटेगरीज में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस वायलेशंस को मॉनिटर करते हैं। वो सन 2000 से लेके अब तक का डिजिटाइज है और 1990 से अब तक का हमारे पास मौजूद है। तो एक वो हमारा अपना सिस्टम है, बाकी हम डिपेंड करते हैं ऑन credible media sources, because all media sources are not credible, as you and I understand, coming from the same background. And also there are think tanks and organizations, academic as well as policy think tanks, who collect data and provide evidence for that data. So वो सारा इसमें आपको नजर आ जाएंगे references में. Thank you. इसके अलावा हम fact finding जी, fact finding missions भी. हम डेटा के बात नहीं मैं करी, मगर हमारी जो वेरिफिकेशन होती है वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। हम बात करने से पहले कोशिश यही करते हैं कि हम पूरे तरीके से वेरीफाई कर लें और फिर बात करें। अगर हमें वेरिफिकेशन नहीं होती है और वाइड स्प्रेड एलिगेशन होते हैं तो हम यही कहते हैं कि इस चीज़ की हमें बार बार कंप्लेंट्स और एलिगेशन मिल रही। Thank you. Thank you. Izaz. Thank you, HRCP and all the members of HRCP, that every year you bring forward a wonderful report which reflects the state of human rights in Pakistan. I'm interested to know one thing which you have reported in the booklet, and you have also commented on that. But I would also like to know that previously we've seen that HRCP members and key office holders, they remain under pressure by the state institutions. What is the situation this time when you were penning down this report? Well, I'm glad that you asked that question. I've already explained to you how the whole civil society is under strain. The surveillance on civil society organizations, especially human rights organizations, has grown over the years. There has not been a single era during our existence that we have not been scrutinized or harassed, or attempts have not been made to either individually penalize us individually and put us at some kind of risk. I think that you know the kind of risks that people like me have also faced. But also, I think now what we see is that while that was something which was surreptitiously done, now it is done obviously, openly, and blatantly, and more threateningly, and institutionally, like the NGO policy, like the Charities Acts that have come out and all the promises. So these are some of the things that happen. But let me assure those who are doing this, you've tried it for 45 years now, at least during my experience. Try it for another 45 years. शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करूंगा। हमारी सीनियर साथी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। तो इसमें तो थोड़ा सा अपनी इनका मैं खुद ही बात करता हूँ कि इस वक्त सिविल सोसाइटी होल आप देखें कि वो तकरीबन खामोश है। बहुत सारे इदारे बंद हो गए हैं, बहुत सारे इदारे जो बिल्कुल खामोश हो गए हैं बात इसकी हुकूमती पॉलिसीज की वजह से। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें वाहिद अदारा है जो इनकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा है और बात कर रहा है मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए, ख्वातीन के लिए, जितने भी जेंडर बेस्ड वायलेंस उन पर बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त हम बहुत ज्यादा थ्रेट का शिकार हैं। सबसे बड़ी एक तो हमारे बार बार ऑफिस सील करने की कोशिश की गई बगैर किसी वजह, बगैर किया। उसके बाद हमारे फंडिंग जो है उनके लिए बैंकों को दिखाया, बैंकों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इनके जो फंड है ये चेक आए वो रिलीज ना किए जाए। बैंक हमें कहते हैं कि हमें तो स्टेट बैंक से हुक्म है, वो डायरेक्टली की बात तो नहीं कर सकते। कहते हैं हमें स्टेट बैंक की तरफ से हुक्म है कि आप चेक कैश नहीं करेंगे। जब स्टेट बैंक से पता किया जाता है कहते हैं हमने तो ऐसा कोई कोई ऐसा हमने नहीं दिया, वो ना कोई ऐसा हमने इशू किए इंस्ट्रक्शन। तो ये इस तरीके से हमें दबाया जा रहा है। उसके बाद उसके बहुत सारी चीज़ों उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 40 साल हिस्ट्री में पहली दफा चेयरपर्सन को घर से उठा के ले गई,
झूठ बोल के, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। वो शायद कोई लंबा चलता मसला, लेकिन उसी वक्त हमारे लेबर के साथी ख्वातीन मीडिया के दोस्त वहाँ पहुँच गए थाने में, तो उन पर प्रेशर बिल्डअप हो गया, सारी एमनेस्टी इंटरनेशनल ये सबकी तरफ से स्टेटमेंट आने लगे, तो फिर मेरी बचत हो गई। हमारे जितने वहाँ पर एक्टिविटीज करते हैं साथी, जहाँ पर भी होती है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। हमारे सिंह के वाइस चेयरपर्सन खड़े हैं, इनको इस बुरी तरीके से 14 मौजूद है सर, इस बुरे तरीके से डंडों से मारा गया। मुझे तो ये खतरा हो गया कि अल्लाह ना करे हेमरेज ना हो गया हो, इंजरीज का, इस तरीके से। और भी इस तरह से बहुत सारे दोस्त साथी जो हमारे कौंसल मेंबर्स हैं, वो अंदर थ्रेट हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको धमकियां दी जाती हैं घरों पे। ये सारी सूरत हाल जो है इस वक्त। जी सभा, डॉक्टर सभा को करते हैं। बहुत शुक्रिया each and every one of you and to HRCP for producing yet another report despite the negative halat of our country. I really appreciate Hina's intervention, who's talked about economic rights, wages. I just wanted to say that inequality has increased across the whole globe, globally, within countries, even the first world. However, people are talking about reparations, damages, and non-recurrence of structural adjustment policies that brought about horrendous poverty, that deprived people of their health rights, fundamental rights. So I feel that next time या HRCP में हम मिलकर ये जो inequality और जो लोगों को squeeze कर रहे हैं, और जहाँ पर वर्ल्ड बैंक और IMF के शराइत को एज अ नेचुरल नॉर्म हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उसको भी हम भी यहाँ से चैलेंज करना शुरू करें. But thank you Munir for raising the Afghan issue. No one talks about that. Thank you Sabat. अली जान साहब उधर पीछे. सफदर, उसके बाद सफदर, फिर जुल्फ. मैं आपको 2-3 बता देता हूँ. अली जान, फिर सफदर चौधरी साहब, फिर जुल्फकारनैन. I want to bring an important issue into your notice regarding the civil societies. अब तो ये हो गई कि यहाँ पे जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज थी, 14 हाउसिंग सोसाइटीज इस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फेस. DC इस्लामाबाद ने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन सबको कहा कि इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए. रीजन कुछ भी थे, बीइंग मेंबर ऑफ वन ऑफ द सोसाइटीज, मैं खुद इस केस को देख रहा हूँ, और हम अदालत में गए. अदालत में सवाल जवाब दिन को हुआ तो DC साहब को डांटा और बड़ी झड़कियां दी गई. अगले दिन हमें खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस अगेंस्ट ऑल द ऑब्जर्वेशंस जो उसने दिए थे आ गए. 14 तारीख को केस है, हम सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये केस लड़ने जा रहे हैं. और बहाने बड़े मजेदार हैं, किस्से बड़े मजेदार हैं. सिविल सोसाइटी की स्पेस श्रिंक होना शुरू हुई थी, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर इन बिटवीन NGOs एंड बिजनेस एंटिटीज, और ये लोग करते थे. इसमें बहुत सारी सोसाइटीज वो हैं जो एम्प्लॉइज की हैं, कम्युनिटीज की हैं, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुलाजिमों की हैं. और इनको कहा गया कि आप पिंडी में जाकर रजिस्ट्रेशन करा दें. पिंडी में पंजाब में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन पे पाबंदी है, तो कहा कि आप अपने एनुअल जनरल कौंसिल के उसकी मीटिंग का इजलास बुला के आप ये करारदाद करा दें. जब हमने करारदाद कराई तो एनुअल जनरल मीटिंग ने रिफ्यूज किया. तो हमें कंटेम्प्ट ये है कि कोर्ट का हुक्म था करारदाद करा के ट्रांसफर करने का, ये नहीं था कि AGM ने अप्रूव नहीं किया. ये कोई बहाना नहीं है. अब ये हम तो हाइब्रिड नहीं है कि हम लोगों से उनकी मर्जी की राय ले लें. तो ये मैं यहाँ पर मीडिया बैठा, आप सब लोग बैठे हैं, ये इशू है और इस पर तवज्जो देने की जरूरत है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सफदर साहब. आसिफ साहब आप माइक्रोफोन जरा दें सफदर को, फिर जुल्फकारनैन, फिर आलिया. वेलकम.
Thank you very much. My name is Safdar Chaudhary, member HRCP Islamabad और Minorities Rights Defender भी हूँ. एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री जो माइनॉरिटीज़ के जो प्रिजनर्स हैं उन पे काम करती है. मैं एक बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहला फैसला जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने दिया, जिसके बारे में आप सबको पता होगा, मारिया शहबाज केस के बारे में. जी बिल्कुल मुझे पता है. मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा. उस केस को HRCP को ये फख्र होना चाहिए कि इस केस को डायरेक्टली HRCP का मेंबर मैं ही देखा. तो इस केस को हम नीचे से लेके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जब आए तो उसके ऊपर जो फैसला आया वो आप सब लोगों के सामने है. और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो माइनर बच्चियां हैं, वो चाहे क्रिश्चियंस की हों, चाहे हिंदूज की हों, चाहे मुस्लिम्स की हों, वो इनसिक्योर फील करें. मतलब उस फैसले से ये तासुर जा रहा है कि कोई 12 साल की 10 साल की बच्ची घर से बाहर निकलेगी, कोई दुकानदार उसको उठाएगा, उससे शादी करेगा, शादी वैलिड रहेगी, बंदे को सजा हो सकती है. तो मैं ये HRCP से ये सवाल करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि HRCP क्या इस फैसले के खिलाफ कुछ रिव्यू पिटीशन में या कोई पब्लिक लिटिगेशन में जाने का इरादा रखती है, या कोई ऐसा कदम. HRCP एक बहुत बड़ा फोरम है जिसको इस फैसले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. बेशक हम डायरेक्टली भी जो विक्टिम पार्टी है उसके साथ मिलकर रिव्यू में जा रहे हैं. तो HRCP से ये मेरी गुजारिश है, हिना जलानी साहब इस पर उनको बात करें तो बहुत शुक्रिया. देखिए, इस पे जो सिविल सोसाइटी है उसकी बातचीत हो रही है और HRCP से के रिव्यू में जाया जाए इसमें, या अगर विक्टिम पार्टी ने रिव्यू फाइल किया तो हम एज इंटरवीनर्स उसमें जाने की कोशिश करें. सो ऑफ कोर्स ये हमारे जहन में बात है. और दूसरी बात ये कि इससे हमने ओपनली मुखालफत भी की है, क्रिटिसाइज भी किया है इसको. even though there is this trend amongst the judiciary कि वो बड़ी sensitive हो गए अपनी इज्जत और आबरू के लिए और contempt issue करते थे, मगर we have a very clear position on contempt of court. We have every right to criticize judgments that are violating or not taking fundamental rights into consideration. और उसके लिए जाहिर है कि HRCP अभी भी बहुत से केसेस पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग बेंच के आगे हम रोज जाते हैं जब भी वो लगता है केस माइनॉरिटीज के हवाले से. तो ये चीजें हमारे ज़हन में हैं. Thank you. First of all, it's commendable that every year HRCP is doing wonderful report, and that's really reflection of situation of human rights in Pakistan. I have one question. I would like to know about के CCD ने जो लोग मावराए अदालत कत्ल किए हैं, what is the number? और एक पार्ट ये है, और ये एक CCD का एक फेनोमेना है, हाफ फ्राई फुल फ्राई वाला, उस पे कोई बात उस पे हुई है? एक दूसरा मेरा पार्ट क्वेश्चन का ये है कि क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से हो रही है और जिस तरह से 10% इस्लामाबाद का जंगलात कटे हैं और जितना प्रॉपर्टी जो कर्टेल हैं उन्होंने जिस तरह से माफियाज ने लैंड्स को, एग्रीकल्चरल लैंड को, फॉरेस्ट को जिस तरह से, या बहुत सारे और जो है वो पैसा बनाने के लिए वो कर रहे हैं और हमारे माहौल को तबाह कर रहे हैं, उस हवाले से इस रिपोर्ट में क्या चीज़ें हैं? क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, शायद मैंने मिस की हूँ मैं, क्योंकि ये हमारे राइट टू लाइफ के साथ लिंक्ड है, तो दैट्स द रीजन कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ. थैंक यू जी. इसका मुख्तसर जवाब ये जुल्फ़िकार रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें एड्रेस्ड हैं. एक बात मैं और बताऊँ, देयर इज अ पोस्टर पुट अप, अ नंबर ऑफ पोस्टर्स पुट अप अक्रॉस द हॉल, जिसको अगर आप अपने QR कोड से, इस पर QR कोड है, उससे पूरी रिपोर्ट आपको जो है वो मिल जाएगी, और एक वेब लिंक भी है, वो उसके आपके पास आ जाएगा हार्ड कॉपी के अलावा. लेकिन ये शुक्र है इसमें चीज़ें हैं सारी. एक चीज़ मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूँ, आपका सवाल इंपॉर्टेंट है. उससे पहले अली जान साहब ने भी बात की थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी, और फिर जो कच्ची आबादियों की इस्लामाबाद की सूरत हाल है. देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये 2025 के कैलेंडर ईयर को फोकस करती है, तो इसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो जनवरी से मार्च के दौरान हुई हैं, जो कि इमीडिएट है, रिसेंट है. एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको फौरी तौर पे होता है कि जो परसों जो बात हुई है उस पर, तो वो उसके स्टेटमेंट्स और पोजीशंस हमारी इस साल की हैं, वो क्रॉनिकल होंगी 2026 की रिपोर्ट में. तो ये वजाहत थोड़ी सी जरूरी है, बिकॉज इट इज अ क्रॉनिकल दैट वी नो रिकॉर्ड फॉर 2025. जी आलिया, I think you've answered my question. Yeah. Okay, good. Then Aruj, फिर फरजाना और फिर उस तरफ. अच्छा, आपके पास पहले चले, आप पूछ लें फिर.
मेरा नाम डॉक्टर जावेद है, मैं डीन हूँ हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद में, ओरल पब्लिक हेल्थ में। तो मेरा आपसे सिर्फ ये, आई वाज सीइंग द रिपोर्ट एंड देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स व्हिच यू हैव एड्रेस्ड, माशाल्लाह, वेरी गुड, but I could not see a very important aspect which is very prevalent in Pakistani society, the campus radicalization and the campus moral policing issues through both violent and non-violent means, and in both public sector and private sector institutions. That is a very basic issue, and that leads to many other issues, I would say. So have you addressed those also, please? नहीं, देखिए ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कैंपस रेडिकलाइजेशन पर से अलग से इसमें बहस नहीं है, या आपका बिल्कुल दुरुस्त, हालांकि अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी है, चार्ज में देख के आप सही नतीजे पहुंचे। लेकिन ये हम इसमें एक फैक्ट फाइंडिंग हम कराते रहते हैं बहुत सारी चीजों में, और ये कैंपसेस की रेडिकलाइजेशन का हमने पहले भी काम किया है, लेकिन इसको मेरा ख्याल है हमें देखने की जरूरत है। So we do not necessarily put together everything in one single report. We do scores of publications every year, fact finding भी, studies भी। तो ये आपकी बात जो है नोट हो गई है, और इसको मेरा ख्याल है हमें बगौर देखने की जरूरत है। And I think student unions में हमारी बड़ी क्लियर पोजीशन है, वो इस रिपोर्ट में स्टूडेंट्स की जो डिसएनफ्रेंचाइज किया हुआ है स्टूडेंट्स को, उस पर हमारी बड़ी क्लियर पोजीशन हमेशा से रही है। लेकिन ये बात कैंपसेस को कैसे रेडिकलाइज किया जा रहा है और क्या हो रहा है, इससे मजीद देखने की जरूरत है। सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन बिल्कुल जी, अरुण यार आपको देखिए ना, अब एक तो लेट आए। मेरा नाम मनोज जाफरी है और मैं फ्रीलांस काम करती हूँ, लिखती हूँ। कई सालों से हम जो देख रहे हैं कि सहाफियों की एक उठापटक लगी हुई है, इसको निकाल दो, इसको हटा दो, इसका नाम ना छपे। तो इस हवाले से HRCP किसी लिटिगेशन पे काम करना चाहता है या इस रिपोर्ट में कोई हिस्सा है, क्योंकि ये तो साल से चल रहा है सिलसिला, और बहुत सारे विक्टिम्स शायद आज यहाँ भी इर्द गिर्द होंगे। विक्टिम्स को पता है कि जब भी उनके साथ कुछ हुआ है हमने आवाज उठाई है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे साथ जो पिछले 3 साल से हो रहा है उस पर सबने आवाज। सप्लीमेंटरी टू इट व्हाट अरुण साहब said, हमने ये देखा अभी इस्लामाबाद में एक अजीब वाकया हुआ। हिना साहिबा, आपने देखा होगा, आप सबने देखा कि हमारे एक साथी दोस्त है मतियुल्लाह जान, उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में गैर मुल्की साथियों के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया, और तकरीब के इनेकाद में कोई काबिल एतराज बात नहीं हुई। उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से एक मुख्तसर सी बात की जो किसी तौर पे काबिल एतराज, उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। और बाज मीडिया के अंदर, और मैं ये कहूँगा कि मीडिया के हर इदारे के अंदर, अनफॉर्चुनेटली मीडिया के अंदर बाज ऐसे काली भेड़े जिन्हें कह लें, उन्होंने एक रोल प्ले किया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टेट ऑफ एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बन गई है कि आप तकरीब मुनक्कद करें, आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और आप सुना ये भी है, मैंने बहुत सारे लोगों से कि कहा गया कि मती को आगे नौकरी भी नहीं करने देनी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि प्लीज इस पे आप अगर आप कोई कुछ कहना चाहें या कोई कमेंट हो। बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं, सिर्फ आपसे इत्तेफाक करते हैं। I think every friend and journalist who we don't even know personally knows this very well कि जब उनके साथ हम उनके लिए खड़े हैं। मतियुल्लाह जान पूरे मुल्क में जाने जाते हैं, जिस वजह से अब उनको टारगेट किया गया है। उनको पहले तो इससे भी बहुत छोटी वजूहात पर टारगेट किया और बड़ा सीरियस आर्म पहुंचाया गया। तो जो ये कर रहे हैं उनके उससे जाहिर होता है कि these people and the policy and those who are driving these policies have proved themselves to be incompetent in understanding, assessing and directing their security policy towards a direction where they give people human security, where they give people a security and warmth in this country। और इसका नतीजा वो भुगत भी रहे हैं और भुगत चुके हैं, बल्कि हमारे पर ट्रांसफर कर दिया उसका हम गलतियां इन्होंने की इन द पास्ट। तो ये भी एक वक्त पर आकर आपकी रियासत पर उंगलियां उठनी शुरू हुई हैं। हमें अब मैं ये